grateful to Rajasthan Tourism for their kind support. We thank Sri Cement for supporting Sheharnama as a part of their CSR initiative. Last but not the least, our heartfelt gratitude to ITC Rajputana and Ehsas Women for helping us put together this boutique literature festival. So in this session, seasoned journalist Sandeep Purohit and trainer educationist Feisal Alkazi joins the conversation with Rima Hooja to discuss the cultural and social milieu of Indian cities spanning from Mewar to Srinagar. The session delves into rich historical legacy and architectural heritage of the regions which Purohit and Alkazi have explored through their writing. May I request the authors to kindly step up. May I request everybody else to please, if you want to take pictures, please move out. May I request the authors and the conversationalists to kindly step up. Thanks to the organizers, thanks to the hotel, thanks to the city of Jaipur. In fact, सभी शहरों पे कस्बों को भी उसमें इंक्लूड कर लेते हैं क्योंकि शहर कस्बे नहीं होते तो शायद आज की यहाँ चर्चा नहीं हो रही होती। और पता नहीं कितने पत्रकार आप तो बैठे हो, तो मैं आजकल अपने अखबार अक्सर महीने बाद या बिल्कुल नहीं पढ़ती हूँ। हालांकि मुझे मतलब कटिंग्स भी आती हैं जो इन कोर्स ऑफ माय ऑफिशियल वर्क समाचार मिल जाते हैं, खबर नवीस बहुत होते हैं, लेकिन अगर इनवाइट नहीं किया होता तो मुझे भी नहीं मालूम होता कि मेरे ही शहर में शहरनामा हो रहा है। सो इट इज़ अ प्लेजर टू हैव फैज़ल अलकाज़ी, जो कि सिर्फ श्रीनगर और कश्मीर के बारे में नहीं पर और कुछ भी काफ़ी कुछ और बोलेंगे। एंड संदीप पुरोहित जी, जो वो भी आप अपनी किताब दिखा दें। मैं उठा लेती लेकिन आजकल एक नए हॉबी ली है गिरने की, तो थोड़ा कंधा ज़रा दोस्त नहीं रहता है। जर्नलिस्ट, लेकिन यहाँ पर उन्होंने फ़ोटो जर्नलिज्म करके और किताब निकाली है। सो वी आर गोइंग टू गेट लॉन्च्ड बिकॉज इफ आई स्टार्ट टॉकिंग आई वोंट स्टॉप एंड आई डोंट वांट टू डू दैट। फैजल जी, आपकी किताब इस वक्त मंच पर नहीं है दिखाने को, but you have written on Srinagar. That's right, yes. So let us go into maybe about the city of Srinagar, how it came to be formed. Historically बहुत ही पुराना शहर है, बहुत पुरानी बसावट है, and we give them a minute to do their thing. But what got you started onto that? Okay. और शायद थोड़ी सी जिस्ट किताब की, ताकि बाद में लोग ऑर्डर भी कर लें अपने अपने कॉपीज। Great. Thank you so much for inviting me. It's my pleasure to be here with all of you. ये पूरा दौर हेरिटेज के बारे में और खासकर बच्चों के साथ काम करना इस मुद्दे को लेकर I started in the 80s, late 80s in Delhi, and because I did so much work over there, I think I got invited straight away to your beautiful city where I worked for 30 years. And then I got pulled into Jaipur Virasat by Faith and John. And one of the first books I did was really discovering Jaipur. So it's a fun book which is being used a lot by students here. तो श्रीनगर के बारे में मैं बिल्कुल संक्षेप में बताऊंगा. You know, the fascination of Kashmir is something that it's a crossroads where so many different things collide with each other. So actually, geographically, just that valley, 50 kilometers across, and the surrounding mountains, which have always given it a huge geographical advantage by keeping people in and out. So वहाँ से शुरू करते हैं. So actually, because it was a crossroads, and as we know, all cities, if they have a trading start, as this city has so much, it has a huge advantage. So because of the river, the Jhelum River, there were no roads at that time, तो सब कुछ वहाँ पर सिर्फ absolutely वो बड़े-बड़े नाव भी आते थे वहाँ पर, and of course we all know the lovely experience of the Shikara where so many things have happened. So this was the meeting point of the Indo-Gangetic plain, so everybody from India and those parts could go up. It was a meeting point for Tibet and China. It was the meeting point for the Middle East, right up to the Eastern Mediterranean. So many cultures coming in close proximity, largely through the Silk Road,
I think this is an audience where I don't need to explain that any further. और वहाँ पर ये भी खूबी थी कि हिंदुइज्म भी था, बुद्धिज्म भी आया वहाँ पर, and of course Islam came at a much later stage. But it's fascinating today when you work in the city, and I worked there for 7 years, from 2004 to 11, the understanding of the syncreticity of that city was very, very lacking. I found even in textbooks over there, it was as though everything had started only after the coming of Islam, as I found in many Pakistani textbooks as well. So prehistory, that idea that really actually over there we have a site, 2 sites from 3000 BC. And perhaps that's one of the oldest places where human beings settled in Asia. It is perhaps the oldest site for Neolithic man in Asia. Okay, we have a beautiful place called Burza Hama, alright, which means the home of birch. So it was a place where birch was brought and used to keep their fires alive. और वहाँ पर खासियत ये है कि लोग ज़मीन के अंदर रहते थे. Used to make a kind of pit in the mountain, and then they used ladders to climb into it, and then they would create some kind of a roof over it. And it's beautiful over there because from Burza Hama and also from Ufukal, which is the place of the potters, we found thousands of objects in clay which were there. And then we found, as usual, burial pits जो उस ज़माने में थे. So burial pits in which we also find one of the earliest places in the world, we find that they used to bury their pet dog as well. So the whole रिश्ता आदमियों और इनके बीच में, कुत्तों के बीच में बहुत ही गहरा है, बहुत ही लंबा है. And now we've dated it back, I think, some recently, another 4,000 years, somewhere in the world, they realized कहाँ पर था. और वहाँ पर लोगों को bury करते थे बैठे हुए. So they were sitting in a crouched position, not the stretched out kind of thing. In the 2nd century over here, we already had Buddhism, and we know यहाँ पर बहुत ही विशाल वो 4th Buddhist conference हुआ था कनिष्क के ज़माने में, and that is the moment when Buddhism splits into 2, Hinayana, Mahayana, as all religions at some point split into different places. And then we find that there was a huge Shaivism दौर था वहाँ पर for about 8 centuries, from the 4th to the 8th century. और इसी दौर के बीच में, of course, Yun Sang, the big traveler from China, escaping from China, you were not allowed to come to India at that time, तो वो यहाँ पर पहुँचे. And you find also quite immediately that there's beautiful literature, and once there's trade, everything happens around it. और यहाँ पर खासियत ये है कि जहाँ पर दरगाह बन जाती है और दरिया भी है, तो दौलत अपने आप पहुँच जाती है. So we say these 3 things are a requirement: the daulat, the darya, and the dargah of a religious person. You must realize that when in the 7th century Islam came into being, it was unique because from Europe, eastern part of Europe to India, it was a porous border. People could just move easily. And they knew when they came to a city, Islam also meant urbanization, the building of a city, because it was so based on trade. And there, you know, usually in Islam, the first 3 things to build are, of course, a masjid, then a madrasa or a religious school, and then one only builds over there when somebody dies, one builds some kind of a structure for them, a mosque. So, Faisal, if I can come in at this point. Yes. Prior to this, we've come to the 7th century or 8th century, even later. Where the city of Srinagar now stands, because you've talked about Burzoma, is there any evidence at that site of any settlement predating what eventually becomes Srinagar? No, not at all, because the first big thrust towards the old part of Srinagar, and as we have an old Jaipur, which we're sitting in right now, and then a new Jaipur, which is huge, तो वहाँ पर यही कहानी थी, और वहाँ पर बहुत ही interesting कहानी थी, क्योंकि you know, the Mongols used to raid very often. They used to come and they used to raid the whole valley. So there was this dreadful Mongol called Dulacha who said the whole Kashmir, पूरे वादी को उसने जला दिया, all the crops, everything. And then of course the locals, being very smart as Kashmiris always are, he said यहाँ से कैसे निकले, उन्होंने इशारा किया and sent him straight into a blizzard, तो उनके पूरे force बन गया. तो उसी समय, this is in 1240, Kublai Khan had died in China. Ladakh was a vassal of them,
And there was a young prince, Rinchen, who was there, who was of course Buddhist, would come and stayed in what is now contemporary Srinagar. तो वहाँ के लोगों ने कहा कि अब ये चला गया तो राजाओं ने सबको खत्म कर दिया, तो आप ही आए. But the problem for him was he was not Hindu. It was a Hindu kingdom. He said, अब मैं क्या करूँ? दुविधा में पहुँच गया. And he was a Buddhist, and through the centuries, of course, all religions battled with each other. So he got up in the morning. वहाँ पर there was a religious man who taken shelter from Persia and what we now know as Iraq and Iran, Bulbul Shah, a Sufi, as we just heard beautiful music this morning. और उसने देखा कि वो नमाज पढ़ रहा है वहाँ पर बिल्कुल दरिया के पास ही. So he asked, what is this religion? He said, it's a new religion. This is Islam. He said, can I convert? He said, yes, you can convert and become a Muslim. So he took on that identity and he took on a new name. So he was called Sadruddin. And then he just stayed there, though he was a Ladakhi prince, he was not from Kashmir. And very soon after that, other people who came after him, there was a beautiful king called Zain al-Abidin. And you always think of him as the Akbar of there. Very secular, very supportive, and on the throne for 50 years, from 16 to 66. So when you have a king who's there for long, the trade is very established, and the city developed. So that's how it developed, and then we know the next door वहाँ पर था when the Mughals in their own way discovered Kashmir. तो वहाँ वो लोग आते थे अकबराबाद से, जो हम आज आगरा के नाम से जानते हैं, और वो वहाँ ये सारे they used to come in huge tented cities. Now that's also a unique part of our country. That first we have places that come around temples or mosques. Then we have tented cities on the move. So abhi zara sochiye, it's a fantastic sight. That if you stood in one place and the emperor's procession was going past you with all the tented cities and where they were to set up for the next time, you would be there for 12 hours. So actually it was 20 lakh people on the move. तो एक पूरा शहर जाता था बिल्कुल यहाँ के एक बहुत ही मशहूर शामियाना को लेकर जो यहीं पर बनती थी राजस्थान में. And as you know, later, time of independence, our main trade with the Middle East was the big shamiyanas for shadi. It was a big trade. So they set up these cities and the Mughals would come. And why are the gardens there? People ask, the Mughal gardens क्यों हैं? क्योंकि वो शामियानास उन्हीं gardens में थे और वो वहीं पर रहते थे. They were used to a moving lifestyle, a nomadic kind of a lifestyle. At one point they said there were 777 actual gardens around what we are now known as Delhi. So have some of those been listed? Are we finding the remains of those? The tents? No, of the gardens. Of course, of the gardens. The ones that we all know. Oh, the famous ones, yes. Yeah, we know Shalimar and Nishat, and then we know many others as well. I think that would be something for someone in the future to focus on if they haven't done enough. Absolutely. But I'm going to move with the tents and all to Rajasthan now. Of course, and we'll come back to this, to the big city that you are also talking about. Yes. Because ये एक एस्पेक्ट हम कई बार भूल जाते हैं. हम अपने ही देश में किसी भी आप पर्यटक स्थल पे जाओगे and you are looking at vast courtyards और गर्मी है. These would have been covered with shamiyanas, with kanats, with spaces that become spaces. जैसे अभी होटल में भी होता है कि यहाँ से वो डिवीजन उनको करना है तो they've already built it in. और आपने जो कहा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ स्पेस, कुछ लम्हे पहले यहाँ पर सूफी कलाम हो रहा था और फिर बदल जाता है और हम लोग बातचीत कर रहे हैं. उसी बदलाव को लेते हुए संदीप जी, you have worked on what are we going to call it, photographing and writing about मेवाड़. तो आप शायद मेवाड़ के तो नहीं है लेकिन राजस्थान के जरूर हैं जी. ये आपके लिए जो पूरा जो आपने पुस्तक करी है, जो आपने दिखा भी थी, आइडिया कहाँ से आया? पत्रकार हैं आप, तो फोटो जर्नलिज्म कर रहे थे, क्या कर रहे थे? देखिए, मैं उदयपुर का एडिटर जब था राजस्थान पत्रिका का, 3 इयर्स का लॉन्ग टेन्योर था. आसपास तो 1-2 साल का होता था, 3 इयर्स होता था. तो जो मैंने मेवाड़ को वहाँ देखा है, चैलेंज होता है हर एडिटर के लिए कि वो उस डिवीजन को, उस रीजन को समझे. उस डिवीजन या उस रीजन को समझे बिना जर्नलिज्म नहीं हो सकता. मैं ओल्ड स्कूल ऑफ जर्नलिज्म का विद्यार्थी हूँ, तो मुझे लगा कि मुझे पूरा मेवाड़ समझना चाहिए. एंड आई स्टार्टेड टू नो मेवाड़. मैंने वहाँ से स्टार्ट किया जहाँ से मेवाड़ का फर्स्ट कैपिटल है नागदा. तो नागदा जो बेसिक फर्स्ट कैपिटल था, वहाँ से मेवाड़ रीजन स्टार्ट हुआ. पप्पा रावल
जो हिस्ट्री है, नो हिस्ट्री मोर देन मी, मुझसे बहुत ज़्यादा तो कुछ जानता नहीं, लेकिन पापा राव का स्टार्ट हो, उससे पहले मोहनजोदड़ो की बात की जाती है कि वहाँ से खुदाई में कुछ चीज़ें मिली। तो मुझे लगा कि पूरी की पूरी जर्नी को समझना होगा मेवाड़ को, तभी मैं मेवाड़ के इश्यूज़ को समझ पाऊंगा कि क्या यहाँ इश्यूज़ हैं, बेसिकली कोर इश्यूज़ क्या है। और हमने एक मैप लिया, वहाँ भी मेरे पास हिस्टोरियन थे मिस्टर भानु कपिल और बहुत सारे स्टूडेंट्स और भी थे, तो हमने एक मैप लिया महाराणा भोपाल इंस्टीट्यूट में, और वहाँ से स्टार्ट की इस जर्नी को कि हम मेवाड़ को समझते हैं पहले। तो मेरे लिए ये अच्छा भी था कि मैं वहाँ जब मैं जर्नलिस्ट था तो काम कर रहा था, मुझे लगा कि बहुत सारी चीज़ें देखनी चाहिए और देखते स्टार्ट किया। लेकिन मैं एक बात कह सकता हूँ कि इस बुक में या मेवाड़ में, मैं पहले बुक की बात करूँ, मेवाड़ ये बुक एक स्लो ट्रैवलॉग है। वैसे तो इसमें एक यात्रा है कैंडिडेट की, एक जर्नलिस्ट की, वहाँ तो उसमें टाइम मिलता है, लेकिन इसमें कई अनेक यात्राएं छिपी हुई हैं। हर फोटोग्राफ की एक स्टोरी है। अगर मैं चित्तौड़ की बात करता हूँ तो चित्तौड़ की एक स्टोरी है, मैं चित्तौड़ में मीरा के टेम्पल की बात करता हूँ तो उसकी अपनी एक अलग कहानी है। आपको वॉर है, लव है, पीस है, हर चीज़ मिलेगी। एक और चीज़ है कि इसमें जो बहुत इम्पोर्टेंट है, लोगों को बड़ी गलतफहमी है कि मेवाड़ में सिर्फ वॉर ही हुआ है। मेवाड़ में वॉर के साथ बहुत कुछ भी हुआ है। उसे मेवाड़ इतना खूबसूरत जगह है जिसकी कोई हद नहीं है। जैसे मैं मीनार का एग्जाम्पल दूंगा, तो मीनार में जहाँ मुगलों की स्टॉकी को वहाँ के विलेजर्स ने आया और लेसन नोन फैक्ट्स भी इस बुक में कवर किए हैं, फोटो से भी उन्हें दिखाया गया टेक्स्ट में। तो जो हिस्ट्री में हल्दी घाटी की बात होती है, लेकिन विवेक जीता महाराणा प्रताप, उसका जिक्र नहीं है। उसका जिक्र नहीं है कि मीनार में किस तरह मुगलों की चौकी को हटाया गया। आज जो मीनार है वो करीब करीब गवर्नमेंट ने उसको वेटलैंड डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन वो वेटलैंड की तरह वहाँ थाउजेंड्स ऑफ बर्ड्स, माइग्रेटेड बर्ड्स वहाँ आते हैं। और मेवाड़ का सबसे खूबसूरत हिस्सा हुआ है, लोगों को पैलेसेस, महल अच्छे लगते हैं। मैं कहता हूँ ये जो मेरी बुक है पैलेसेस, महल और म्यूजियम से आगे निकल करके मेवाड़ के 1500 ईयर्स की लाइफ को रिफ्लेक्ट करती है, वहाँ के आदिवासियों को, ट्राइब्स को रिफ्लेक्ट करती है, वहाँ की फार्मिंग टेक्नोलॉजी को रिफ्लेक्ट करती है, जो रेट से आज भी वहाँ फार्मिंग हो रही है। मुझे वो टाइम याद है कोविड का, जब कोविड के वैक्सीनेशन के लिए वो गाँव, डॉक्टर्स की टीम गाँव जाती थी, तो पूरी की पूरी टीम, पूरी की पूरी ट्राइब्स का विलेज खाली हो जाता था। मतलब गाँव खाली है, किसको वैक्सीनेट करें? तो जो मेवाड़ दिखता है बहुत खूबसूरत, वो तो अपनी जगह है ही, लेकिन वहाँ की जो लाइफ है वो भी अपने आप में आज ये पूरी कहानी बयान करती है कि किस तरह ट्राइबल्स के साथ आज भी चीज़ें चाहिए वहाँ। तो आपने तस्वीरों और उसके साथ साथ जो आपके नोट्स हैं उसके माध्यम से बहुत कुछ कवर तो करा है। और अभी आपने दो तीन ऐसे नाम लिए, नागदा, which brings us back to the formation of early cities, क्योंकि वो प्रथम राजधानी एक तरह से मानी जाती है। हालांकि उसके पास ही आहड़ है जो आज से 5000 साल पहले की 2500 BC की आबादी बसती है, और एक नहीं 90 साइट्स हैं आहड़ सभ्यता के। लेकिन आपने मीनार का भी नाम लिया। नाउ मीनार इज टर्निंग इनटू अ वेटलैंड, इट इज अ वेटलैंड नाउ। और जैसे कि आपने बुरज़ोमा की बात की, मीनार ऑल्सो द आर्कियोलॉजिकल एविडेंस goes back to the आहड़ सभ्यता पीरियड। तो कई बार जिस तरह से आप लोग चीज़ को देखते हैं और उस अपने नज़रिया को किसी भी माध्यम से, लेखनी से, चाहे छाया चित्रों से प्रस्तुत करते हैं, it brings us back to realizing how much there is to see in our country. I want to come back to you now, क्योंकि आपने जैसे नागदा की बात की, और इन्होंने भी अभी फैजल जी ने कहा कि कोई भी एक धार्मिक स्थल बन जाता है और ट्रेड बहुत महत्वपूर्ण हमेशा है। तो द मिनट यू हैव ट्रेड, दैट फोकस, दैट सेंटर, दैट रिवर, दैट एरिया वेयर द कैरावैन्स इंटरक्रॉस, अपने आप ही आबादी आती है। लेट अस गो बैक टू द स्टोरी ऑफ द फिजिकल वुडन एंड brick and stone building of the city of Srinagar. So that's always something that comes much later. Because you know, originally across India we often think कि हमारे यहाँ जो सारे मंदिर हैं, why they all largely from the 11th and 12th century, around that time. Because everything earlier was only built in wood, and wood never lasts in that kind of way. Or wood like most of the early Buddhist. Absolutely. Maharajas also. जी, बिल्कुल. So in the only available medium perhaps originally is wood in the valley, and along with that of course bricks, but often typically they built in 2-3 different ways their residential houses. They built in a way that you had to withstand earthquake, और ये बहुत ज़रूरी है जब construction करते हैं in traditional societies, तो वो वैसे beams लगाते थे
और उनके बीच में mud या sometimes brick. So when a building shakes, it's really the wooden structure that is shaking and withstanding that the thrust of the earthquake. So that's a very unusual part of architecture there. तो जहाँ भी हम architecture को देखते हैं तो वहाँ आसपास जो चीज़ें हैं जैसे आप जानते हैं इसी शहर में भी they couldn't afford that the huge amount of money on sandstone that the Mughals were using elsewhere. So there was this imitation done with the pink and with the detailing and that kind of detail in this city. So within the traditional structures are different. जो वहाँ की मस्जिद भी हैं बिल्कुल अलग हैं. आप ध्यान देंगे there's never a cupola on the top. There's never a dome. It is always like a three-tiered, almost Chinese looking. तो जब पहली बार मैं काम कर रहा था उसके आर्किटेक्चर के बारे में, so I wondered, I said, ये क्यों है? And actually, the first time a dome was introduced in Kashmir was very recently when they have the mosque where there's supposed to be a hair from the beard of the Prophet. So that was the first. Money was given by Saudi Arabia. So immediately we built a mosque in the shape of what we recognize as being a mosque. The mosques have been there forever with a very different kind of a look. So along that river bank, it's not like Varanasi जहाँ सारी चीजें घाट हैं. घाट जरूर हैं और घाट आप जानते हैं कई चीजों के लिए इस्तेमाल होते हैं. वहाँ पर जो भी उनके क्राफ्ट्स थे और क्राफ्ट जैसे यहाँ पर राजस्थान में और वहाँ पर कश्मीर में, they reach a high standard of excellence because they've developed over centuries and because that is the mainstay of the trade. So you can't think of Kashmir or Srinagar without all those beautiful things. And as you just indicated, in the medieval period, cloth was it. क्योंकि cloth से बनता था आपका शामियाना, cloth ज़मीन पर था, cloth दीवारें थी, cloth आपके बड़े-बड़े तकिए थे, cloth आपके कपड़े थे. So the main item of trade across Asia, certainly to the west, was always textile and fabric and material. And then of course from that, the shawls that were popularized by Badshah, but you know, the two shawls, the doshala, that design itself came from there. And then so much of the elegance of Mughal craft comes from people in Kashmir. You know, we think of all those beautiful objects that we recognize now, or so many of the motifs, जो नामदा की रग्स पर या जैसे हम लोग कहते हैं कश्मीरी कार्पेट, उनके motifs क्या हैं? Crewel work जो हम लगाते हैं घरों में as curtains. So everything is fashioned from textile. So that dexterity, you go and see, you think कैसे बनते होंगे ये चीज़ें. तो मैं किसी स्कूल में काम कर रहा था, एक लड़की ने कहा आप ज़रूर घर आइए. ऐसे ठीक है, मैं चलता हूँ. तो बिल्कुल जैसे वहाँ पर वो सब रहते हैं पानी के आसपास, पूरा शहर ही वैसा है. तो आप किसी भी जगह पर शिकारा में पहुँच जाते हैं और उसके साथ छोटी-छोटी पगडंडियाँ. पहला रास्ता बना था 1880 में. So you can imagine, till then everything was totally only by water. So I went to this boy's house, walked in, traditional house, very large, नीचे का hall. वहाँ पर 17 लोग embroidery कर रहे हैं. You know, men and women sitting together through their entire lifetime, making those beautiful shawls, and each one of us must be having at least one. So think across the world, you know, till of course it started getting copied in, we know, in Birmingham and Lancaster, and then that's another whole story, Manchester. Kya hua, this Amiya motif, paisleys and all, came up in that way. So always it's Kashmir with the craft. और craft का मतलब so many ancillary industries उसके साथ साथ कि कैसे पैक करेंगे, कैसे भेजेंगे, ट्रेड कैसे आएगा, पैसे कैसे कमाएंगे, कितने पैसे देंगे, और उसके साथ of course copper, another big item, and so many things. So trade is a very important part for any city to remain vibrant and on the move. तो एक तरफ दरगाह, दूसरी तरफ trade. Trade and communication. उससे जो भी local culture है, जहाँ भी बसावट है, they all come together. Of course. I'm going to come back to you there, क्योंकि आपने जैसे इसमें रहट की वो है, the so-called Persian wheel and some of the other ways of drawing water. You know, rahat is also arghat. So it's a common thing that was being used across India through to Persia, Iran, that area. आपने ऐसी बहुत सारी तस्वीरें भी इसमें डाली हैं जो एक तरह से लुप्त होती हुई संस्कृति है, लुप्त होके या फिर वो आ जाती है. You know, you do plays with, particularly with students all the time. So you draw on these and you bring those together on the stage.
लेकिन आजकल हम लोग ही इन चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो एक तरह से फॉसिलाइज होकर किताबों में मिल रही हैं, आपने उनको एक तरह से जीवन पोर्ट्रे किया है। तो थोड़ी सी उस यात्रा की भी आप बात करें कि किस दृष्टि से आप इन चीज़ों को इंक्लूड कर रहे थे, शहर और शहर से जुड़ी भी जो ग्रामीण इलाकों की चीज़ें हैं, जो ज़रखेज़ है, उसको आप कैसे यहाँ पे लाए? ये उदयपुर तो इतना खूबसूरत शहर है, जिसको आप जितनी बार देखें उतना कम है। उसका जो उनके जो घाट है वो आज भी इतने खूबसूरत, लोग क्या झील के किनारे किनारे होकर चले जाते हैं उदयपुर को देखिए। जब आप उनके घाटों में घूमेंगे तो वो अपने आप में इतना खूबसूरत है, इसकी क्या, लेकिन उसकी खूबसूरती के साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं कि पानी कहाँ से आता है। मेरे दिमाग में एज ए जर्नलिस्ट सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह है कि ये पानी इन झीलों को भरता कहाँ से है। तो ये पानी पहाड़ों से आता है, तो किन पहाड़ों से आता है, ये क्वेश्चन मेरे अपने आप उठते गए और इन क्वेश्चन के सहारे में आगे बढ़ता है। तो मैंने सोचा चलो पहाड़ों को देखते हैं। मुझे बड़ी तकलीफ के साथ कहना पड़ रहा है कि उदयपुर में जो पहाड़ है वो बहुत तेजी से कट भी रहे हैं। वहाँ क्या है कि पहाड़ों का मालिकाना हक निजी लोगों के पास है, क्योंकि वो फार्मिंग के लिए उनको दिया हुआ है। जब पहाड़ मेरा है तो मैं उसे बेच सकता हूँ। वहाँ रिजॉर्ट्स बन रहे हैं पहाड़ों पर, और जो रिजॉर्ट्स बन रहे हैं वो पहाड़ काट रहे हैं। तो हमने पहाड़ों को समझा, पानी के साथ पहाड़ों की यात्रा शुरू करी, और वो पहाड़ लास्ट तक पहुँचते हैं। गुजरात, उसका एक हिस्सा गुजरात में जाता है पानी में, और एक हिस्सा राजस्थान में पानी जाता है। और राजस्थान गुजरात को बहुत पानी देता है आज भी, वो अलग विषय है, उसमें नहीं चलेगा। बहुत बड़ा वहाँ का पानी का हिस्सा, वहाँ की जो इंडस्ट्री है बहुत बड़ी, वेदांता की हिंदुस्तान में, उसको भी जाता है पानी का। तो ये पानी झीलों में आता था। हमने पहाड़ों पर जब आगे बढ़ने लगे तो हमने कहा छोटे छोटे पहाड़ों, छोटे छोटे समतल जमीनें हैं और उन पर फार्मिंग हो रही है, और वो फार्मिंग आज भी उसी टेक्निक से हो रही है, रेल के माध्यम से। हमने घर में देखा कि वहाँ झोंपड़ी के ऊपर सोलर लाइट लगी हुई है, अब पहुंचे नहीं है लाइट अभी तक। तो उस गांव में पहुंचे, उस जगह पहुंचे, तो बोले 40-30 घर का घर है। बोले हम लोग वनवासी हैं, हम जो गाँव में रहते हैं, हमको जो सरकार पट्टे दे रही है इनके, अब हमको लाइट भी मिल जाएगी, लेकिन उससे पहले हमने लाइट सोलर के जरिए लगानी है। तो जब हम उदयपुर देखते हैं, उदयपुर से 60 किलोमीटर दूसरा हिस्सा देखते हैं, तो बहुत फर्क आ जाता है। जो उदयपुर को रोशन करे हुए हैं, चमन किए हुए हैं, वो पहाड़ी हैं जिन पे वो लोग रह रहे हैं, जिन पे वो आदिवासी हैं, और वो आदिवासी आज भी उसी तरीके से जी रहे हैं। वो आज भी रेंट चला रहे हैं, वो आज भी रोशनी के लिए मोहताज है। 2 तरीके के लोग जो शहरों की तरफ आ गए, उनकी दुनिया बिल्कुल बदल चुकी है, लेकिन जो वहाँ रह रहे हैं उनकी स्थिति बिल्कुल डिफरेंट है। तो वो मैंने आपको बताया, सोलर से झोंपड़ी में वहाँ लाइट जल रही है। तो बोले अब हमको पट्टे मिल रहे हैं, सरकार हमको पट्टे दे रही है, और अब हम लाइट से भी मुखातिब हो जाएंगे। तो जब आप किसी चीज़ को देखते हैं, किसी शहर को देखते हैं, तो शहर के बनने के पीछे और शहर की जो कुछ दिखता है उसके पीछे बहुत सारी हिडन स्टोरीज होती हैं। ऐसे में एक स्टोरी और शेयर करना चाहूँगा। एक पहाड़ पर हम गए, तो वहाँ बोले कि यहाँ राजीव गांधी आए हुए थे और सोनिया गांधी आई थी। तो मैंने कहा क्यों? कि बोला राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थे और वो यहाँ आए थे, तो उनको किसी ने टेलीग्राम डाल दिया कि आपको असल आदिवासी देखना है तो इस गाँव में आइए। तो राजीव गांधी ने 19 किलोमीटर अपना टूर चेंज करके वो वहाँ पहुँच गए। तो वहाँ जो आदिवासी देखा और उनकी हालत देखी, तो वो कुछ खा रहे थे, तो राजीव गांधी ने उसे खाया। बोले ये तो कड़वा है, आपका सर, बोले हमारी आदत हो गई। तो बोले कि आप गेहूँ क्यों नहीं खाते? बोले गेहूँ महंगा है। बोले ये कितने रुपए किलो आता है? बोले 1.5 रुपए किलो आता है। तो बोले मैं अगर आपको 1.5 रुपए किलो अनाज दूँ तो गेहूँ दे, तो बोला हम खा लेंगे। और वो दिल्ली गए और उन्होंने सबसे पहले योजना चालू करी, वो आज तक चल रही है, अलग अलग पॉलिटिशियंस अलग अलग तरीके चल रही है, लेकिन गरीबों के लिए पहला बार सस्ता है ना, मेवाड़ की उस आदिवासी के घर से वह आज भी सोनिया गांधी के यहाँ। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग नहीं करता हूँ, एज ए जर्नलिस्ट, लेकिन ये करना शुरुआत वहाँ से हुई थी। तो आप दोनों ने ही बहुत सारे मुद्दे उठाए हैं, लेकिन सस्टेनेबिलिटी और इकोलॉजी के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं वो बात भी आई है। और पट्टा देने वाली बात, तो 1881 में द फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया इन 1881 अंग्रेजों के उस समय हुआ था। मेवाड़ राज्य फोर्स था, मेवाड़ राज्य था। भीलों से पूछा गया कि तुम्हारी जमीन कौन सी है। अब उनकी कोई सेटल्ड एग्रीकल्चर था, वालर पे करते थे, वो काटा जब वो होती,
नहीं नहीं, दिस इज नॉट योर लैंड, व्हाट इज योर लैंड? तो पट्टे पहले वहाँ दिए गए, वो खेड़वाड़ा एरिया है, ज़्यादा उसका एक तरह से आधुनिकीकरण आप कह सकते हैं वो हो गया। लेकिन जहाँ पट्टे अभी भी कट रहे हैं, हम लोग अपने सो कॉल्ड विजडम में सबका जीवनचर्या जो है वो अपने जैसा बनाना चाहते हैं। साथ में जो आपने पर्यावरण वाली बात करी, उससे जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो जोशीमठ में तो देख ही रहे हैं। मैं वापस आपके से ये सवाल करूंगी, श्रीनगर, द कश्मीर वैली इज बेसिकली हैज सीन सिवियर फ्लडिंग बीच में, उससे माशी चीज़ों पर भी बहुत असर पड़ा है। Absolutely. तो उसमें भी तो बहुत कुछ ह्यूमन मेड कॉजेज हैं। I think in any place, as you develop and grow, and as you know, Srinagar under the British took a totally different door. जहाँ पर British were not allowed to buy property, तो वो house boats का पूरा वो tradition शुरू हो गया वहाँ पर. And the city moved around the Dal Lake, which was not the center of the city at all. No lake is ever the center of a city. A river may be, but a lake never is. So that's what happened. And with the British, you know, the architecture, everything, bilkul change ho gaya. So the modern hospital, the police station, the post office, the school, these became the kind of movements of our life. We were born in a government hospital built by the British. We went to a school run by the British, reading British classics. फिर उसके आगे हम लोग पहुंच गए कचहरी में काम करने या कहीं पर, and the whole architecture began to change. Yeah, I'm just watching somebody telling us that we're close to time's up, so I'm going to cut it short. Lots of new problems. Of course, the flood was a big one. I was to take a group of people around my book to all the walks which are outlined in my book, but the day before our hotel was washed away. It was an amazing thing, frightening, you know, कि कितना destruction उस छोटे से flood, छोटा नहीं था, बहुत ही बड़ा सा था, but caused in the valley. So this is a story we're seeing everywhere, isn't it? From Joshimath to any part of India. So in the case of the Kashmir, the Srinagar flood, but it affected all of Kashmir. And Kashmir has a long history of water management. You know, there were waterways in the 6th century. There were ways of lifting water, there were ways of carrying water, there was sustainability. जो राजसमंद झील से पहले ही झील बने, we knew how to be collective. Humans knew how to manage water, they knew how to care for the environment. वो जब हम भूलते हैं, then we see the scenes of destruction. And so much building were washed away, so much of the heritage has been lost, as must have happened over the past, we know that. Which is why works like yours and yours give us visual, written, other records of what has been. So for me it has been a great takeaway that we look at a city not just as a building, but what has made that building, वहाँ बसावट क्यों हुई थी, सबसे पहले वहाँ क्यों कोई आया, किसी और जगह क्यों नहीं। और कई बार क्यों होता है कि आपकी एक राजधानी शिफ्ट होकर 5-6 किलोमीटर दूर जाती है, और सिंपलिस्टिक नहीं होता कि यहाँ पानी खत्म हो गया, इतने बेवकूफ़ नहीं थे पहले वाले लोग, और भी कारण है, यू आउटग्रो अ प्लेस। आमेर के लिए मुझे अक्सर कहा जाता है कि वो पानी खत्म हो गया था, पानी खत्म नहीं हो गया था, कितनी और आबादी वहाँ छोटी सी आबादी में आ सकती है। दिस एरिया, देयर आर अदर रीजंस। By the time of Savai Jai Singh, you could build again in a larger area. Without fortification. Without fortification. For a city without fortification. नाम की एक तरफ जहाँ ये अपने बागू बाजार में है, वहाँ खाई थी नाम की। दीवार भी एक तरह से शहर पर कोटा है, लेकिन वो उस तरह का नहीं है कि भाई 40 फुट चौड़ा और वो सब। The same thing happens whenever we look at any place. So for us, it has been a pleasure to sit and share. Well, I was just listening, but to share the experiences of two different eco-zones of a great country that celebrates the culture, the built heritage, the unbuilt living heritage, and the rural heritage that makes this urban buildings we have. हाथ जो जिन्होंने कुछ भी तराशा है, वो हाथ तो लोगों के ही होते हैं ना, वो चाहे ग्रामीण एरिया में रहे, चाहे शहरों में रहे। और खाना जो है, गेहूँ है, जो कनक है, चाहे वो बाजरा है, चाहे वो लोकल क्या है, बुरट के कांटे भी खाते हैं जैसलमेर में जब ज़रूरत होती है, उन्हें उगाने वाले भी इंसान होते हैं, कुछ प्रकृति हमें देती है। So I'm happy to be part of this. Thank you, Shehernaama, for inviting
us to be the first panel. Thank you We so look forward much. to most of